हिंदू मुस्लिम करते रहो और अपने सीट निकालते रहो, जीत हासिल करते रहो, यही है, इसके सिवा और कुछ नहीं है। जो डिमोलिशन के लिए आए हमें कोई नोटिस नहीं दिया, ना कोई जानकारी दी। 5 बजे करीब आए थे और आके कहने लगे जी ये डीडीए की लैंड है, आप इसे खाली कर दो और इसका डिमोलिशन होएगा। तो वक़्फ़ की लैंड है, वक़्फ़ का मैं इमाम हूँ यहाँ, 13 साल से मैं इमामत कर रहा हूँ वक़्फ़ की तरफ से। तो ये वक़्फ़ की लैंड है, आप इसमें कैसे डिमार्केशन कर सकते हो, कैसे इसे डीडीए की लैंड बता सकते हैं कि नहीं, ऊपर से ऑर्डर हैं इसके और इसकी डिमोलिशन होएगी इसकी। यहाँ पे आते हुए हमें 30 साल हो गए जी आते आते। हमें खुद ही नहीं मालूम था कि क्या हो रहा है। ये पता हुआ था कि भाई हाँ बुलडोज़र आ रहे हैं, अब कहाँ आ रहे हैं कहाँ नहीं आ रहे। और रात को फिर इन्होंने यहीं पे बैरिकेड लगा दिए, पब्लिक को यहाँ से जाने नहीं दिया अंदर, और अंदर वो बुलडोज़र चला रहे हैं। इंक्रोचमेंट कह रहे थे। इंक्रोचमेंट तो कोई इंक्रोचमेंट नहीं था। पुरानी मस्जिद थी हमारी, कब्रिस्तान है हमारे, सभी धार्मिक जो किताबें सभी वहीं पे पढ़ी हैं हमारे, कागजात वगैरह हमारी जो वहाँ पे बच्चे पढ़ते थे उनके एडमिशन फॉर्म वगैरह वहाँ पे पढ़े हैं। I had seen that little mosque before by passing by when I pass by auto, when I pass through, I've seen, like on the side, madrassa kids playing around it, and they Right. were like such a lively source, like they were always playing cricket and we used to joke with them and everything. Mehrauli is said to be, a place which is like from where like 1,000 years ago, like the Delhi Sultanates started. So Right. there are a lot of graves of these ancestors. People are very attached to those graves, Right. and they were just taken off in the middle of the night and at the dawn of the morning. Around 6 months ago, okay, something happened which was strange. So like my landlord, we were going to we went to the Friday prayers. There is a mosque just outside my place called Jungle Wali Masjid, and that the DDA came there to evict the mosque from there, and that is a very small mosque. It is in the in this on the side of a forest. It's a very quiet place in the middle of a city. That kind of a vibe. It doesn't look like Delhi. It's look like something else. And they came there to demolish it, and like it was just like somebody was trying to take away my little place of oasis of peace from within the city from me. And like I and some of the people locals, we started protesting. We stopped the DDA. One thing that they always tell me with pride, our place is the place where there is so much syncretic culture, so much composite culture, and it's even reflected in the kind of
architecture they have, even the nature that they have. There is an ashram, there are so many mosques, there are mazar, there is a church, nearby, and then there is a gurudwara, and there is a Jain mandir, So it's a very, very spiritual place. इसके खिलाफ हमने जो हाई कोर्ट में मुकदमा दायर करा है इंसाफ के लिए कि हमें जो है वहाँ से हमारा हक मिले, हमें इंसाफ मिले। जो हमारी मस्जिद जो 700 साल पुरानी जो मस्जिद थी वो भी शहीद कर दी गई। जो हमारे कब्रिस्तान है, हमारी कब्रों के साथ जो बेहुरमती और बेद भी करी गई, कब्रों को तोड़ा गया, रोंदा गया कब्रों को। और जो हमारी दरगाह शरीफ थी वो भी 700 साल पुरानी दरगाह शरीफ थी। उसमें 2 बुजुर्गान दिन बहुत बड़ी हस्ती आराम फरमा रही थी। एक बुजुर्ग का नाम हज़रत शेख जलालुद्दीन तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह, दूसरा बुजुर्ग का नाम हज़रत शेख पररेखा रहमतुल्लाह अलैह। उनका गुम्मट बना हुआ था, बहुत अच्छे से बना हुआ था, वो गुम्मट भी तोड़ दिया और मज़ारात भी तोड़ दिए, बिल्कुल ज़मीन दोष कर दी। किसी का जो कफन दिख रहा है, किसी का कुछ दिख रहा है, सारी कब्र खुली हुई है और ऐसी खुली हुई है कि उन कब्रों के साथ जो बेइज्जती, बेहुरमती, बेद भी बहुत ज़्यादा की गई है। बिल्कुल ये नहीं देखा भाई ये कब्रिस्तान है, कब्र की बेहुरमती हो रही है। 1976 से कब्र खोदी है मैंने। हमें नहीं मालूम अंदर क्या गड़बड़ घोटाला कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं अंदर, हमें अंदर जाने नहीं दे रहे। हम 4 दिन से यहीं खड़े जाए। Inside the madrasa, I saw there was nothing left. They had already destroyed everything. In fact, I could not identify the things there. They said they have shifted students to Eidgah, which is next to madrasa. I went to Eidgah. Seeing me there, all students started crying. They were lying on floor on a single bed sheet. They did not have sleepers, they did not have jackets and sweaters. It was not only a madrasa or mosque, it was also a shelter for many orphan students. We used to play together and we used to conduct a medical camp at the end of every month. पढ़ाई कर रहे थे सुबह के 5 बजे, तो एक लड़का आया फिर अजान देने, और वह अजान दे रहा था। उसने अजान पढ़ी तो उसको कैमरा में नज़र आए बहुत सारे लोग खड़े थे बाहर। तो फिर उसने आके बोला हमारे कार साहब को, बाहर बहुत सारे लोग खड़े हैं। उनका फ़ोन जमा कर कर नुकनी की बाहर निकाल दिया मदरसे से। फिर हमारे पास कमरे में आए और उन्होंने बोल दिया सामान पैक करो अपना। हमको सामान किसी पे आया किसी पे नहीं आया, एक कोई बना है कोई ऐसा है, ऐसे सब बच्चे भगा दिए बाहर, ठंड में सब खड़े कर दिए। फिर उन्होंने 3-4 घंटे खड़े रखा बाहर। There is an event called Phool Walon Ki Sair, which is organized in Mehrauli. It's where Hindus and Muslims together take the flowers, from one place to from mandir to a mosque to a mazar. That is the kind of a place, and it is where Hindus and Muslims have been living very, very peacefully and with love. And like Sikhs and Jains and Christians, they have been living together for like centuries. The Mehrauli is older than the project of ghettoization, which began after the partition. Places like Mehrauli, which have a lot of syncretic culture, like they are like a threat to people, those who thrive on hate. There is a whole project of making Muslims invisible and irrelevant, politically irrelevant and invisibilize and normalize. And the worst part of it is the normalization of violence and destruction of their properties.